Is my screen visible? Yes. Okay. Yes. Okay. So very good morning to all. Good morning. Welcome to the last presentation of Workshop 2. Today we'll be discussing how to win the hearts and minds of people. This is the basic requirement of a leadership. Leadership requirement, the first and the foremost requirement of a leader is to win the hearts and minds of people, is how to communicate in an effective manner with its followers, with all the people. Like especially when we are in teaching and learning process, isn't it? We are teachers. So what we do is we communicate with our students, with our fellow faculty members. So पूरा खेल basically मुझे लगता है academics में is how you communicate. So let's see how we can enhance our communication skills. Good communication is just as stimulating as black coffee. It can stimulate you to think, to change, to do something, to learn. You can stimulate your students. And it can make just as hard to sleep after. If you have stimulated that person, then it will become difficult for that person to sleep even. Now, communication can be of three types that we are talking in today. We'll talk about presentation, how to make an effective presentation. We'll talk how to give an effective speech. And last but not the least, how to give an effective talk. First of all, before starting with the presentation skills, you should understand that communication is an art. Just like painting is an art, drawing is an art, making rangoli is an art. Similarly, communication is an art that you can learn. It's like riding a bicycle. It's like driving a car that you have to learn, or typing maybe. If you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. So it doesn't comes obviously. एक certain portion आ जाएगा. Suppose we communicate, right? सभी communicate करते हैं. Similarly, सभी drawing बना सकते हैं. किसी की अच्छी बनेगी, किसी की अच्छी नहीं भी बनेगी, right? तो ये आर्ट है जिसको हम जितना पॉलिश करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम उसमें एफर्ट्स डालेंगे, विल इम्प्रूव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसी चीज नहीं है कि इनबॉर्न है. इट्स नॉट एन इनबॉर्न. इट्स एन आर्ट दैट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, दैट हैज टू बी लर्न. शिद्दत से लर्न करना पड़ेगा. देन यू विल गो ऑन इम्प्रूविंग इट. Now, few basics of communication. When you start that, suppose anything, suppose I have to give a speech या presentation. सबसे पहले ये समझो कि हमको किससे communicate करना है. जैसे, for example, when I was giving the presentation, first of all, I asked to IEM Calcutta कि मेरे audience कौन है. मेरे audience प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ऑडियंस असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, मेरे ऑडियंस मिडिल लेवल मैनेजमेंट है. कौन है मेरा ऑडियंस? यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस वेरी वेल. देन सेकेंड पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड योर एबिलिटीज. मेरी स्ट्रेंथ क्या है? इट्स
the same thing doesn't work for everyone. It will be different from person to person. So you should realize your strength, your abilities. Then the last thing is, and I focus it every time, do you got some training? Do you have done the practice for your sessions? And that is the most important part. For example, I said for leadership also, हमको HOD बना दिया जाता है, हमको प्रिंसिपल बना दिया जाता है, लेकिन क्या हमको इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई है? क्या हमारी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया गया है? क्या हमको बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे विजन के बारे में सोचते हैं? सो इट हैज टू बी ट्रेन्ड. सिमिलरली जो कम्युनिकेशन, जो एक लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, what training you have done for it? So please do not take it as granted. You should undergo a certain training, do practice for it to enhance your communication skills. Some basic ground rules for a presentation, for anything, presentation, speech, talk, anything. You should be prepared. Be prepared means तुम्हारे thoughts, you should know क्या कंटेंट होने वाला है, how you are going to speak, how you are going to speak. So be prepared. You have to do a lot of practice. ऐसा लगता है कि Hello. prepared. Get prepared yourself. It can be your dress. It can be how you will speak, your gestures. Get prepared for it. Second thing is be personal. Now, this is again important. You should try to create intimacy with your audience. थोड़ा पर्सनल बताने से अच्छा लगता है. You can narrate your personal story. See, this is also, I also went through the same thing. मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी. मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे इंप्रूव की, मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे इंप्रूव की, मैं अपने सब्जेक्ट पे ऐसे वो किया. सो यू शुड बी अ लिटिल पर्सनल. आइडेंटिफाई योर की मैसेज, क्या देना चाहते हो, और फिर उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. दे शुड बी अ स्टार्ट, दे शुड बी अ मिडल, and then should be an end. At the beginning, there can be a hook at the beginning. I'll tell you how to create a hook at the beginning to engage your audience. Engage an audience by giving something that they can relate. Suppose आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो, तो ऐसी चीज बात करो जो स्टूडेंट्स उसको कंटेंट मतलब एकदम रिलेट कर पाए, राइट? आप फैकल्टी से बात कर रहे हो तो यू शुड टॉक समथिंग दैट फैकल्टी कैन रिलेट. So you should talk to them to which they can relate. They should feel, yeah, ऐसा तो मुझे भी लगता है, even मैंने भी तो यही ट्राई किया था, even this is the same thing. The audience आपके साथ connected रहेगा for the entire time. Now I'm coming to the first type of communication, that is presentation. I would like to know that कोई echo तो नहीं है. I've changed my laptop. Is it okay? No noise is there. I would like to know the feedback in between. Roy sir, is only थोड़ा सा अटक के आ रहा है. अटक के आ रहा है. हाँ, थोड़ा स्लो, मैंने टाइमिंग थोड़ा सा ये है, but you don't have an echo. Should I speak a little slow? No, not it's not about speaking. It is about, I think, it's a network problem, ma'am. Yeah, network is little bit. Yeah. Okay. But your audio is clear today. Your audio is absolutely clear. No issues with that. Absolutely clear today. Okay. Now I'm coming to the first and the prior this thing important part, that is presentation. Now, what should be the presentation tactics? Again and again, I am repeating it. It requires rehearsal. बहुत बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार बोल के देखिए, एक आध बार मिरर के सामने बोल के देखिए. You do rehearsal, just not making the presentation. Presentation बनाए, हर स्लाइड के नीचे नोट्स लिखिए कि ये स्लाइड आएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली स्लाइड आएगी तो मैं क्या बोलूंगा. हर स्लाइड के नीचे नोट्स बनाइए. That will be the second part. Then
पूरे प्रेजेंटेशन का रिहर्सल करिए. दैट इज द थिंग. It needs to be presented with active punctuation. Don't simply read the words. Now use metaphoric language in your presentation. Use metaphors in your presentations. Now I'll elaborate on this. कि metaphoric language, metaphors को कैसे use करते हैं in presentation, right? Now जब हम metaphors use करते हैं in presentations, तो बेसिकली मेटाफर्स क्या करते हैं? इट मेक योर टेक्स्ट, योर प्रेजेंटेशन मोर एंगेजिंग, मोर मेमोरेबल. इट कन्वर्ट्स एन इंटैंजिबल थिंग इनटू अ टैंजिबल थिंग. इंटैंजिबल मीन जिसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते, बट अगर आप मेटाफर्स यूज करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टैंजिबल थिंग. सपोज आई वांट टू से, if I use this line, love is a garden. Love is an experiment. Love is a thrill battlefield. So love is what? It is an intangible thing. But if I want you to experience it, to feel it, I have to use metaphors for it. Love is a fine wine. So this is a using metaphors in your presentation skills. Like if I say truth and justice, then if I just say truth and justice, it is an intangible thing. If I say truth is solid, justice is a liquid, yeah, I'm converting intangible to tangible. Freedom. Again, using metaphors in your presentation. Freedom is a gust of wind, letting you to spread your wings. Yeah. Some more about this, using this metaphors in your presentation. Instead of coming up with a series of metaphors, मतलब हम हर slide में different metaphors use कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Presentation का एक theme metaphor होना चाहिए. Whatever you think about it, that metaphor should be repeated. आपको याद हो, मैंने first presentation जब दिया था workshop 2 के first day, मैंने जो यूज किया था, मैं कंटिन्यूसली थीम पे जा रही थी. दैट द थीम वाज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर चेंजिंग. आई यूज द रोमन मैथोलॉजी, सो आई वाज रिपीटिंग दैट मेटाफर. सो आई वाज यूजिंग एंड in the presentation I was using a theme of the metaphor, right? So and you have to extend that theme in the entire presentation. Trick of using theme metaphor is also called extended metaphor. हमेशा कोशिश करिए कि आपका presentation एक metaphor के साथ start हो. Like suppose अगर मैं एक presentation दे रही हूँ and if I am trying to engage your employees, और मैंने कहा turn your work into a box of chocolates. Now this is work, right? Now you are using metaphorical language to express it. So when you're using this metaphorical language, you are saying, turn your work into a box of chocolates. तो जब आपने स्टार्टिंग में ये यूज किया मेटाफर, तो आप पूरी स्लाइड में इसी को कंटिन्यू करिए. आप हर वर्क को, हर असाइनमेंट को एक कैंडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक दूसरी कोई स्वीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स है उसी के डिफरेंट फ्लेवर्स को लेके आप वर्क के डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करिए. आर यू गेटिंग इट? डोंट यूज स्कैटर्ड मेटाफर्स. एक स्लाइड में कुछ मेटाफर यूज हो रहा है, दूसरी स्लाइड में दूसरा मेटाफर यूज हो रहा है, तो उससे वो अफेक्ट नहीं आएगा. अगर आप थीम यूज करेंगे मेटाफोरिकल लैंग्वेज की, तो इट विल गिव अ ग्रेटर इम्पैक्ट. मेटाफोरिकल लैंग्वेज से स्टार्ट करिए, मेटाफोरिकल लैंग्वेज से एंड करने की कोशिश करिए. हमेशा जो पहली स्लाइड है और लास्ट स्लाइड में कनेक्शन होना चाहिए. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, this is how the tree is growing, and finally this is the grown up tree, right? Suppose मैंने कहा कि communication is just like horticulture department, right? तो horticulture department, so I have to say कि जैसे communication is like, first of all you sow the seeds. सबसे पहले आप कुछ basic चीजें जब learn करते हो,
then you are sowing the seeds of communication. Then धीरे धीरे क्या होगा, वो जो communication grow करेगी आपकी, that plant will grow. धीरे धीरे रूट्स आएंगी, धीरे धीरे उसकी लीव्स आएंगी, धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन विल ग्रो. इट्स नॉट वन डे दैट आपने आज एक प्रेजेंटेशन सुना और it's done. It's not that way. So you can show that by taking this step, it will be the seed. By this step, you will grow the roots. By this step, you will grow the branches. By this step, you will grow the fruits of communication. So you have to have some theme of your presentation. I hope I'm able to deliver it. I'm taking a little pause. Anyone wants to say something? Let us get into it. Okay. Like what I'm trying to say is this. I want that आपका जो PowerPoint presentation है should be in a bottle of metaphor. ये bottle है, this is a bottle of presentation and you are imbibing the metaphor in your PowerPoint presentation. Like suppose I use this metaphor. मैं अभी इस पर थोड़ा focus कर रही हूँ क्योंकि this will give a flair to your presentation. जो चीज थोड़ी अलग है, बाकी आप लोग सब फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रेजेंटेशंस देते रहते हैं, आपको रूल्स पता है प्रेजेंटेशन के. Like suppose I use this. What does this metaphor means? It's so effective metaphor. Begin with the end in mind. What does it mean? Begin करो ये सोच के कि कहाँ पहुंचना है. Right? Like suppose I'm cooking something and I'm seeing the recipe before it. So when I'm seeing the recipe, maybe on a YouTube to make something, I think lockdown में हमने बहुत कुछ किया, right? हमने recipes देखी चीजें की. To know what to just see on YouTube कि जब मैं ये बनाऊंगी तो last में क्या चीज cook होके आएगी. So this is begin with the end in mind. I'm starting cooking. I know beforehand कि लास्ट में शायद ये कुछ ऐसा बन के आएगा. Like suppose another example, suppose I'm traveling. Suppose I'm going to Nagpur and I'm seeing the map before going to Nagpur. What I am doing? I'm just trying to see how the roads are, how much time it will take. So this is what? Begin with what? Begin with the end in mind. And this is an important part of our life. We should always begin with the end in mind. See, this is another. This is the business growth. It can be any growth. It can be a communication growth. It can be student growth. It can be the faculty growth. This is how you grow actually. You sow a seed. पहले roots आती हैं, एक leaf आती है, all leaves आती हैं, and धीरे धीरे plant grow करता है, and you are getting fruits. So this what you are doing. Students क्या कर रहे हैं finally? This is a 4 years degree course. This metaphor can be used on your VTech presentation also. First year, second year, third year, fourth year. If you want good fruits, healthy fruits, full of juices, you have to go one step at a time. So when you use this language in your presentation, it becomes more effective. Now this is further education. This is again education. You are aiming to stars. You are trying to stretch yourself. See, इसने अपने आप को कितना stretch किया इस person का देखिए. Just see the foot of this person. Are you able to visualize this? इसकी बहुत सारे interpretations हो सकते हैं इस figure के. इस person ने अपने आप को edge पे रखा हुआ है, एकदम edge पे, to reach to that star. Trying to stretch yourself, trying to make efforts like anything, doing whatever you can to move ahead. Now, to make presentations, there are many softwares available. एक तो हमारा सीधे जो PowerPoint है, Microsoft का PowerPoint, Windows का PowerPoint presentation जो है, ये simple presentation है.
लेकिन इसके एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जो बहुत इफेक्टिव हैं, दे आर ऑल्सो देयर. लाइक एक सॉफ्टवेयर है ये प्रेजी, मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशंस भी हैं, मैंने खुद बनाती हूँ मैं प्रेजी में. I'll see to it if I can show it after this presentation is over. You can purchase this. It is free also. For few days you can have free also. It gives us very good effects. Effect create करने के लिए बहुत अच्छा है. Like suppose अगर ये वाला presentation है, इस टाइप का भी है, प्रेजी में एक टेम्पलेट है, many templates are there. तो पूरी आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड यही रहेगी हमेशा, राइट? तो आप जब पहली स्लाइड पे क्लिक करोगे स्टेप 1 पे, तो उसके स्टेप्स पे वो चला जाएगा. देन अगेन इट विल कम टू द मेन स्लाइड ऑटोमेटिकली. देन यू क्लिक ऑन द सेकंड, इट विल गो अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स. देन यू क्लिक ऑन 3, अगेन कुछ सीरीज ऑफ स्लाइड्स. सो इट बिकम्स वेरी effective software for making presentations. Deadly people used to use Prezi to make the presentations. दो अभी उन्होंने हमको PowerPoint पे ही बोला हुआ है, but you can use Prezi to make your presentation. It's very effective. जैसे ये एक टेम्पलेट है, it is written Prezi का टेम्पलेट है. अगर आपको कुछ दिखाना है, टाइमलाइन दिखानी है, this can be 2014. You can change all these जो मैंने इसमें लिखे हुए. I didn't got time to change this. Otherwise, I could change this timeline to 2021, 20, 19, 18 इस टाइप से. And you say that suppose you want to present yourself in front of a jury. Then you say, see, this is how I started my career. In 1993, I did this thing. Then in 5 years, I have grown to this. Then in the next 6 years, I have grown to this. So पूरा हमेशा प्रेजेंटेशन में यही टाइमलाइन दिखेगी. जैसे ही आप क्लिक करोगे, मे बी 2001 पे आप क्लिक किया, तो वो आपको you can attach 3 to 4 slides to it, and it will come back again to the next this thing. So it becomes very effective. Basically जो business presentations होते हैं, जब हम startups को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जब जैसे मे बी बिग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपने आप को जब प्रोजेक्ट करे, दे यूज दीज सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर वेरी वेरी इफेक्टिव. ये जो नेक्स्ट चीज है, यू ऑलरेडी नो कि प्रेजेंटेशन, ये व्हाट नॉट टू डू, यू नो कि प्रेजेंटेशन इस टाइप से नहीं होना चाहिए, इतना क्लमसी नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी just emphasize the main points. You use 6x6 rule in presentation. 6x6 rule means, can anybody say what do you mean by 6x6 rule in presentation? ये शायद हमारे कल के क्विज में भी था. Bullet. What is Hello? 6x6 rule? Yes. I know only a bit about it. It's a bulleted presentation, not too much text in the presentation. And mostly infographic. Yeah. So presentation में bullets होने चाहिए और images होने चाहिए. Very right. 6x6 rule का मतलब ये है कि there can be 6 bullets, and in each bullet there can be 6 words. ये 6x6 rule कहता है presentation का. जैसे this is 6x6 rule. See, 6 words per line, 6 bullet points per slide. See, this is what it means. मैंने इसको हटाया. अरे क्या हो गया? Why it is not going next? Just wait a minute. Yeah, this is a 6x6 rule. It says there should be so this is 6x6 rule. See how many bullets you are able to see. There are 6 bullets, and they say that in each bullet, in each sentence, you are having 6 words. This is the ideal thing for presentation.
This is the ideal thing for presentation. I hope you got it. What is 6x6 rule? But here is 5 bullets. It's clear. It's clear. Okay. You can interrupt me. See, I'm not taking as a class कि मैं ही बोल रही हूँ और आप in whichever you feel कि yes, ma'am, please stop. Let's discuss on this point. We may please discuss on that point. You may give suggestions, ma'am. If we do this also, it will be better. I can see 5 bullets here, right? Maybe this is 6, but it should be 6. I'm sorry, ma'am. It should be 6. मैं सिर्फ sentence लिख रही थी, तो हो सकता है कि मैंने एक sentence. But it is 6x6 rule. 6 bullets, 6 words per this thing. Maybe 6x6 rule says this. You should take proper color. कोशिश करिए light background हो with the dark this thing. Like I always prefer white and black. मुझे कुछ भी पसंद नहीं है. White background with black. Clarity होनी चाहिए what you are writing. This is a very bad slide अगर आप इतने सारा मतलब बहुत सारे colors, उसको बहुत सारा shading and all. This is not considered as professional presentation. एक और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है फॉर प्रेजेंटेशन. वन इज कॉल्ड स्टिकी टॉकी. इसको हम अभी ऑफलाइन भी जाके देखेंगे जब पूरा कंप्लीट करेंगे. दिस इज अगेन वेरी वेरी इफेक्टिव सॉफ्टवेयर अगर इसको आप यूज करोगे. जैसे सपोज आपको कुछ एक दिखाना है. सी दिस इज अ स्लाइड मेड यूजिंग टिकी टॉकी. like you have made an image and then you are writing signifying it. एक stages बना रहे हैं in that. So you can do it using Tiki-Talkie as well. So you can use 2 softwares apart from a normal PowerPoint presentation. One is the Prezi software and another one is Tiki-Talkie software to make your effective presentations. Madam, how is keynote? Hello? Yes. How is keynote? Pardon? The keynote. I'm not able to hear. Counterpart of PowerPoint. How is that? Somebody is saying something. Can you be a bit louder? How is keynote? Pardon, sir? Keynote. Keynote is the Apple counterpart. Keynote. Keynote is the Apple counterpart of the PowerPoint. Uh-huh. So how is that software? That was my question. Keynote is another software, sir. I don't know about it. That is Apple. Acha, using Apple. Okay. Yes. हाँ. iOS. Yes. iOS. Okay. Because in Keynote, I mean, if you tell something, then the assistant, the Siri, I mean, you can do and that Siri also will do it. Acha. Okay. That is the thing. Yes. I'm not having Apple laptop, though I'm using Apple laptop right now Right. of my daughter. But मैंने कभी presentation Apple में बनाया नहीं. So I don't know, sir. Maybe it's better. But I have used Prezi many times. I have given my personal presentations using Prezi many times. Okay. So I have this thing. Even Tiki-Talkie मैंने थोड़ा बहुत देखा है, but कभी present नहीं किया हुआ है. So Okay. and as you are saying कि जो Apple का जो वो है, वो again बहुत अच्छा है. So definitely होगा ही क्योंकि Apple तो known है for its this thing. Should we give a pause for presentation? Something more we would like to discuss? Before I start with the next this thing. This is the most important part, speech, madam. Yeah. I'll cover Because it, but I think we can have something of I feel presentation. nervous, when talking in front of the crowd. Actually. Yeah. It's always everyone is nervous actually. Do you feel nobody is nervous? No, I feel nervous. सब nervous होते हैं. अच्छे से अच्छा speaker. नरेंद्र मोदी जी भी नर्वस होते होंगे मुझे ऐसा लगता है. हर कोई नर्वस होता है बोलने से पहले. वो तो होते ही है. सब कोई होता है सर, सब कोई होता है. उसको मतलब बहुत वो रहता है कि मेरी स्पीच है आज. कोई भी अच्छे से अच्छा स्पीकर. मोदी जी कितना अच्छा बोलते हैं, सच अ गुड ओरेटर. बट कोई भी नर्वस होता है. तो इसको अपनी वीकनेस बिल्कुल मत समझिएगा प्लीज.
हाँ तो पहले 1-2 स्लाइड बहुत नर्वसनेस होता है, उसके हाँ बाद लाइक हाँ थर्ड स्लाइड से if I'm able to capture that amount of energy, that can carry on ultimately. But हाँ first 2 slides are very crucial. first 2 slides are very crucial. Very true, it's very crucial. थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो फर्स्ट 2 स्लाइड्स बनाइएगा, हमेशा मैं ये हमेशा करती हूँ कि जब मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ तो मैं फर्स्ट 3 स्लाइड्स में कोशिश करती हूँ कि जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में, मुझे वही बोलना है, कुछ याद नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, मैंने ये फील किया है, क्योंकि आप नर्वस रहते हो और आपने जो बोलना है वो आपकी स्लाइड में नहीं है, आपने पीछे कुछ एक चीज सोची हुई है, तो नर्वसनेस में बिगड़ जाता है। तो स्पेशली जो प्रेजेंटेशंस बहुत डिसाइडिंग होते हैं या तो उनमें मैं कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट 3 स्लाइड्स हमेशा ऐसा हो कि जो लिखा हुआ है मुझे वही पढ़ना है। आर यू गेटिंग इट अब्रो सर? और फिर जब मुझे पता है मैं 4-5 स्लाइड बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी, तो उसके बाद में मैं कंटेंट को कम कर देती हूँ, फिर आई बिकम कंफर्टेबल। या वही हाँ और लोग जो सामने बैठे हुए होते हैं, स्पेशली द सीनियर पीपल अबव 50, 55 और 60 इयर्स ओल्ड, उनको देखे तो पूरा समटाइम्स वी फील वेरी नर्वस, उनका एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट। बिल्कुल आपको पता है ब्रो सर, जो मेरा सेकेंड डे प्रेजेंटेशन पोस्टपोन्ड हुआ, वो बेसिकली अचानक मेरा डीएसटी से कॉल आ गया। मैंने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल पुटअप किया था कॉलेज के लिए, तो उसका प्रेजेंटेशन एक दिन पहले शाम को आया और नेक्स्ट डे मेरा वो था 19th को, तो मैंने इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि उस दिन का प्रेजेंटेशन था। मैंने प्रेजेंटेशन प्रॉपर बनाया हुआ था, एवरी स्लाइड वाज सो स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग लाइन टू लाइन आई वाज नोइंग व्हाट आई विल से। वो प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले ही मंगवा चुके थे, लेकिन कब होगा प्रेजेंटेशन वी वर नॉट नोइंग इट। सो प्रेजेंटेशन पहले ही 1 हफ्ते पहले उनके पास जा चुका था और मैंने 1 हफ्ते में सारा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया था। देयर वर ओनली 14 स्लाइड्स आई वाज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ डीएसटी, और मैंने हर स्लाइड के नीचे कंटेंट भी लिखा हुआ था। आई वाज नोइंग कि मैं सिर्फ इतना ही बोलने वाली हूँ। तो जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ उस दिन, उन्होंने मुझे अचानक बोला कि 7 स्लाइड से शुरू करना। मैं एक पूरा स्टोरी फॉर्म में मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था, तो वो मतलब स्टोरी के अंदर प्रेजेंटेशन था, आप सोच सकते हैं। तो और अचानक मुझे उन्होंने 7 स्लाइड बोला, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर प्लीज, आपने मुझे 8 मिनट्स दिए बोलने के लिए मुझे, और मैं उसको 6 मिनट्स में कंप्लीट कर रही थी, बट उन्होंने बोला नहीं आप 7 स्लाइड से ही बोलिए। मुझे ना मतलब उस वक्त इतनी पैनिकी हुई और मुझे पूरे टाइम ये लगता रहा कि मुझे वो बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, और वो मैं गैदर ही नहीं कर पाई। मेरी जो स्ट्रेंथ थी फर्स्ट 6 स्लाइड्स की, फर्स्ट 5 स्लाइड्स की मेरी मेन स्ट्रेंथ थी, और मैं उसको नहीं कर पाई, और प्रेजेंटेशन के बाद मुझे बहुत बुरा लगा कि डिडंट वेंट वेल। Madam, but at least in the COVID times, you're getting the DST call for projects. I mean, हाँ, लेकिन it that went is a so good thing. bad. It went so No, bad. that doesn't matter. But at least you're getting a call. But if all my projects are getting rejected from 2020 onwards. I don't know why. Whether This will DST is also get rejected. But मुझे इतना बुरा लग रहा था कि see, this happens always. And मैं nervous हो गई जैसे ही उसने बोला ना कि नहीं आप 7, and they were very old, मतलब very senior people, पूरा grid भरा हुआ था, so many people were there. I was not knowing कि कितने लोग होंगे, but so आप कितनी भी तैयारी करो, but it happens. Anything else you would like to share? Anybody would like to share कि वो ये try करता है presentation में before starting with the speech part? Madam, I have seen actually Professor M.M. Sharma. I hope many of us know the name. Achha, okay. Earlier he was the UDCT, now the ICT Mumbai director. He is a fellow of Royal Society of FRSI. So we have seen that whenever he speaks, so he says that presentation is a great obstacle for us. Presentation that will always guiding my thoughts, but my thoughts are more powerful than the presentation.
And that is why he never writes anything, and he speaks instantaneously. And he speaks for about, say, sometimes it is 1.5 hours or so, but people are spellbound to hear his speeches. Very true. So that is that I have noticed. I mean, we feel that it is very difficult that without presentation speaking. No, actually, the words do not matter much. How you speak, कितनी energy के साथ, क्या body language है, वो बहुत matter करता है. I suppose content तो matter करता ही है, but it should come from within. अंदर से निकलना चाहिए है वो. You should believe what you are writing. So in that case, इसलिए अगर आपने presentation खुद बनाया हुआ है तो आप ज्यादा अच्छा करेंगे. Suppose आपके किसी जूनियर ने आपको प्रेजेंटेशन बना के दे दिया तो आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे. जैसे अपन देखते ना, कोई टीम विजिट कर रही है, अगर प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल ने बनाया है तो वो बहुत इफेक्टिवली आएगा. किसी और ने बनाया है तो वो कम इफेक्टिवनेस में आएगा. किसी भी चीज में वो अंदर से नहीं निकलता है फिर, क्योंकि आपने जब खुद नहीं लिखा होता है. ट्रू ना? Yes, absolutely. फोकस बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन में. कुछ मेटाफर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको अपने स्टूडेंट्स को बोलना है कि यू हैव अ लैक ऑफ फोकस. नाउ इसको अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे बोल सकते हैं? कैन यू सजेस्ट अ मेटाफोरिकल लैंग्वेज फॉर लैक ऑफ फोकस? एनीवन? We can give that Arjuna example of that bird's eye, right? Okay. That can be given as a story. But of course, it's not a metaphor, but it is, it can be a story. And any other? Yeah, it's a good suggestion. Focus, Arjun का जो bird का था वो तो मतलब perfect example है of focus. And Neeraj Chopra, the gold medal which Neeraj Chopra won in Tokyo, that was full of focus. It was like it was a tremendous feat for India, and he shows that what actually focus is. So we can show these kind of examples also. Like one, if I want to show lack of focus, I would like to say, अगर मैं स्टूडेंट को बोलूं कि तुम में lack of focus है, तो मैं बोलूंगी कि it's just like कि तुम्हारी wardrobe एकदम wardrobe जो है एकदम clustered form में है. मतलब wardrobe में है सब कुछ, but वो properly रखा हुआ नहीं है. It is all overflow हो रहा है and cluttered form में है. So you have to just organize the things well. Everything is there in you, just know where to keep where in your wardrobe, in your this thing, so that it is not cluttered. It is very structured. It is very clear in your thoughts. So if the things are clear in your thoughts, you will improve your focus. Anything, matlab, it is how you compare it basically. Good morning, ma'am. Morning. Actually, I missed some part of your lecture because suddenly my computer stopped at the morning, 8:30, and then I had to come to college, and in the train I could not connect. So half an hour was gone to connect. So actually, we are talking about presentations only, or something else also has been covered. No, presentations only we are covering. We have covered the softwares for presentations, what type of language we should use for presentations, and how we should prepare ourselves for the presentation. Right. Really, sir, madam, actually I missed one of my favorite parts actually, because I am working on the students presentation for last 10-12 years. I used to take the seminar classes even in since 2008-9, and from that time I am continuing the conducting seminar classes for almost every in every batch I try to incorporate it, and wherever there is already in the syllabus, no problem. But this seminar class, I have found that it's very, very important. To make them practice how to present anything that they want. It may be just one small sub-article that has been covered, and I tell them to present that in front of others. It
it comes with many colors, flying colors. It can be completely dumb from their end, and it can be completely unique from their end also. It's a huge type of expression that can be done. Moreover, it has been found that in many times, even the very senior person presenting, but they are presenting in the presentation, they are copy pasting a paragraph, which looks a very, very odd thing, which should not be done, I hope, because it instantly takes the whole thing away, because the audience, I mean the listeners or the viewers, because it's a combination of thing, viewing as well as listening. So the viewing thing comes first. Then people try to focus on what is being offered. So when eyeing the slide, it looks very odd if there is a paragraph and people are saying something. So it's very important to really make the slideshow in such a way that it become presentable. The presentability needs a lot of time to understand within student, among also the teachers. There are a lot of teachers that I've seen that they are not good presenters. But through good presentation also, even not a huge work, but it's just a small initiative taken that can be also presented in a very, very nice manner if it is if getting the chance in that way. As you said that you did not get the chance, although you had a very nice planning, but they broke your planning from the 7th slide. Even it happens to us also. Sometimes, madam, the students are saying for a long time, and we just say that, hey, कहाँ पे क्या किया है वो बोलो. तुमने कहाँ से शुरू करना है, वहाँ से शुरू मत करो, 6-7 स्लाइड से बोलो जहाँ से तुम लोग. हाँ, तो वो उनका भी फ्लो गुजर जाता है, मतलब तभी खराब हो जाता है. तो हम कभी-कभी वो सोच नहीं सोचते. What happens when you're on the other side of the table? It was so easy to tell to your student, इसको skip कर दो. I do it many times. जब मैं M.Tech के वाइवा लेती हूँ, PhD का, ये सब छोड़ो, लिटरेचर सर्वे मेथोलॉजी पर आओ, कि रिजल्ट्स पे आओ, ना. वही बात है. अंदर साइड पर ऑफ द टेबल, उनके साथ जो गुजरता है, हाँ, वही. Right. Very true. Yeah, very true. We should teach our students how to present. It's an important part nowadays, and ये इम्प्रूवमेंट होते ही आता है. मुझे बहुत पसंद है कि अभी तो खैर हम डडले का ही प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं आपको, बहुत कम चेंज कर रहे हैं क्योंकि एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस. बट मुझे प्रेजेंटेशंस वो पसंद है जिसमें टेक्स्ट बहुत कम हो, इमेजेस ज्यादा हो, or you explain it so it becomes a grabbing one, story ho, and all those things. So now I'm coming to the next part, that is speech. Now before we go how to give a speech, how to get prepared for it, what should be the content of the speech, we'll see what the speech is all about. Speech में 3 main parts हैं. एक तो है words, the power of words. But you will surprised to know the expert says that words play only 10% role. Only 10%. The body language, when you are giving the speech, the body language plays 50% role. My God. And your tone of voice, क्या modulations हैं, कहाँ आपको हाई जाना है, कहाँ पे आपको लो जाना है, कहाँ पे थोड़ा सा माहौल बनाना है. The tone of voice plays 40% role. और हम क्या करते हैं जब स्पीच करते हैं, अपनी लिखते हैं, तो हम जब स्क्रिप्ट लिख लेते हैं अपनी, तब हम सबको लगता है हमारी स्पीच रेडी हो गई, जबकि आपका ओनली 10% रेडी होता है. So this is very important. The speech is how you are delivering it. That is very, very important. So when you are delivering the speech, pay attention on your body language. आपके hands के gestures हो रहे हैं, how you are moving, try to engage. कुछ होना चाहिए body language में, smile, gestures, all should be there. Voice में modulations होना चाहिए, up, down, monotonous नहीं होना चाहिए, and you should be conscious about it. Another thing I would like to share, before we decide how to give the speech, we speak at the rate of about 150 words per minute. But we can hear at the rate of about 1000 words per minute. So there is a gap. क्यों audience आपकी speech से presentation के बीच में कहीं और दुनिया में चला जाता है? क्योंकि वो सुन सकता है 1000 words per minute
और आप बोल सकते हो एट द मोस्ट 150 वर्ड्स पर मिनट. सो देयर इज ऑलवेज अ गैप. तो उस गैप को आपको फिल करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट स्पीक फास्टर देन दिस. यू शुड नॉट स्पीक इट. This gives a lot of extra time, and so our mind wanders. And that is why speech is an art. Speech is a skill that you are required to develop. How to speak in such a way कि आप उसको उसी के बारे में सोचने को मजबूर करें. जो एक्स्ट्रा टाइम है वो उस टाइम पे दूसरी चीजें ना सोचे, वो आपने जो बोला है उसी के बारे में अपने आप को कोरिलेट करे, या उसको भी कुछ एक फीलिंग आए, वो वही उसी के बारे में सोचे. The mind should not wander between this extra time. Another important thing, 50% of what we hear goes within 5 minutes. जो भी हमने सुना 5 मिनट बाद हम भूल जाते हैं. And 75% तो हम 2 महीने बाद पक्का भूल जाते हैं. तो हम क्या याद रखते हैं? Only 25%. जितना याद रखते हैं 25%, उसमें से भी 60% करेक्ट होता है, बाकी हम हमारा खुद का एड ऑन होता है. So you have to say something in a way that people remember that thing. क्योंकि रिटेंशन बहुत कम होने वाला है. आप जितना भी बोलने वाले हैं उसमें 25% का भी 60% होने वाला है. So it is very less people. Yes. Yeah, actually, when we are taking this online classes, when you said that 50% is amounting to the body language, when we are taking online classes, it's very difficult to, I'm taking one course on semiconductor devices. Although I have my own feeling that maybe I am teaching well, but once I took the feedback, the feedback was horrendous. I mean, students said that, sir, we do not understand anything in the subject. Which I can relate it right now that it may be because of the body language was missing. So मैं भी यही कहने वाली थी. जब वो स्लाइड आ रही थी तो मैं कह रही थी कि मैं बोल तो रही हूँ 50% बॉडी लैंग्वेज, और स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि बट व्हाट अबाउट ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन. बहुत मुश्किल हो जा रहा है मैडम. सो ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि आप अच्छे अच्छे स्पीकर्स को देखिए, शिव खेरा है, संदीप महेश्वरी, जब ये लोग बोलते हैं स्टेज पे तो वो इम्पैक्ट आता है. जब आप बोलते हो आपके सब कुछ बोलता है, मतलब आपके जेस्चर्स, आपका टोन, आपका सारी चीजें, सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है. और ऑनलाइन में दिस इज मिसिंग एक्चुअली. लेकिन वन थिंग, देखो यूट्यूब तो लेकिन चल रहा है, यूट्यूब भी तो ऑनलाइन है, वहां पे तो जेस्चर्स आप आते हैं शायद. लेकिन गूगल मीट में क्लास लेने का टाइम में आई डोंट यूज नॉर्मली जूम में एटलीस्ट वी आर एबल टू सी योर फेस, बट आई टेक क्लासेस समटाइम्स इन गूगल मीट. वहां पे स्लाइड शेयर करने से वी डोंट सी एनी फेस. हाँ, वेरी ट्रू. गूगल मीट में भी, जूम में भी जैसे ऐसा ग्रिड में दिख रहा है वैसा उसी में दिखता है. बट जैसे यूट्यूब हम सुनते हैं किसी का, क्योंकि वो स्क्रीन में ऑल अलोन होता है तो वो इम्पैक्ट आ जाता है यूट्यूब में, है ना, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है. दो ऑफलाइन में वहाँ पे तो आप पूरा स्क्रीन ही देख सकते हो उनको, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं होता है. प्री रिकॉर्डेड लेक्चर का यही फायदा है. अगर स्टूडेंट सुने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे कॉलेज के सारे सालों के, मतलब 4 सालों के हर डिपार्टमेंट के हर सब्जेक्ट का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर बनाया गया था लास्ट ईयर. तो पूरा है, मतलब अगर 36 लेक्चर है आपका तो 36 लेक्चर का पूरा विद ऑल जेस्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. बट स्टिल जब भी हम जूम में रिकॉर्ड करते थे वो चीजें, फिर हमारा वो छोटा सा वीडियो हो जाता था साइड में, तो फिर भी वहां पे तो वो चीज एग्जैक्टली नहीं होता है जो एक्चुअली पूरा अगर हमें दिखाई दे तो जो इफेक्ट होता है वो नहीं होता है. तो आप उसको यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए ना, और जो लिंक को आप सिर्फ अपने आपको पब्लिक नहीं करना है तो यू कैन शेयर, यू कैन हैव अ प्राइवेट यूट्यूब लिंक आल्सो. नहीं, यूट्यूब में है, सारे यूट्यूब, मेरा तो सारा यूट्यूब में है. पर प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे भी तो स्लाइड को शेयर करना था.
तो स्लाइड शेयर करने के बाद वही सेम अच्छा। चीज वो साइड में छोटा सा, जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ छोटा सा, तो वो भी मैं भी वहां पे छोटा सा ही हूँ, तो उतना उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा ना, वही प्रॉब्लम है। अदरवाइज कैमरा लेके, वीडियो कैमरा लेके पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्लास को, घर बैठे नहीं होगा। चलिए ठीक है। अनदर थिंग इज कि जो अटेंशन स्पैन है वो 10 सेकेंड्स का है एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट का, और 17 सेकेंड स्पैन है एक एन अडल्ट का। सो हमको ये चीज याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ लिखने की चीजें नहीं है। हमारा कंटेंट हमको समझना चाहिए कि जैसे ही थोड़ा लेंदी हुआ, मतलब आपका ऑडियंस आपके हाथ से जा रहा है, तो आपको कुछ बीच में पंचेस देने हैं, कुछ स्टोरी बोलनी है, कुछ स्टैटिस्टिक्स देनी है, कुछ आपको बोलना है बीच बीच में, सो दैट आप ऑडियंस को अपने साथ कनेक्टेड रखो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। यू शुड नो कि मेरा जो ऑडियंस, यू शुड नो योर ऑडियंस वेल। नाउ दिस इज व्हाट I would like to say. These are the speech tactics. First is anything. Communication requires rehearsal. मैंने presentation में भी कहा, speech में भी कहा. It requires rehearsal, rehearsal, rehearsal. आप ये सोचें कि आपने speech लिख दी, आप पढ़ के बोलेंगे तो वो बहुत ही बेकार है, मुझे तो नहीं पसंद है, बट ठीक है। लेकिन आपको उसको बार बार पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ के भी बोलना जा रहे हैं तो भी आप उसको बार बार पढ़िएगा, बार 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 पढ़िएगा। इट रिक्वायर्स रिहर्सल। इट शुड इंक्लूड पॉजेस। यू शुड वेरी द टेम्पो, दैट इज योर वॉइस मॉड्यूलेशन। use body language to convey energy and enthusiasm. Eye contact is very important in speech. You should have eye contact with your audience. अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के दीजिए। ऐसा नहीं कि ऊपर देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, क्योंकि आप नर्वस हो रहे हैं इसलिए आप सोचें मैं तो ऊपर ही देखता रहूंगा, मैं नहीं, दिस इज नॉट राइट। आपको 1-2 मिनट लगेगा, फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आई कांटेक्ट को रखिएगा अपने ऑडियंस के साथ। उनको लगना चाहिए कि आप उनसे बात करें। आप सोचिए ना, आपसे कोई बात कर रहा है 1-to-1 और आप दूसरी साइड देख रहे हो, तो क्या कैसा जाएगा कम्युनिकेशन? आप उसको देखोगे ना सामने। If there are 60 audiences in the room, तो भी उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ, यू में शिफ्ट योर आईज, बट उनकी तरफ देखो। ओके। ऐसा नहीं कि आप ऊपर देख रहे हो जहाँ वो लोग ना दिखे, साइड में देख रहे हो, ऐसा नहीं। तो सामने जो वर्टिकल वॉल है, आई कैन सी दैट आल्सो। नो यू डू नॉट सी अ वॉल। आपको कोई नो नॉट साइड में, सामने में जो वर्टिकल वॉल है, हाँ, सामने में जो वर्टिकल वॉल है, इफ आई एम लुकिंग एट दैट, ऑडियंस को लगेगा कि आई एम लुकिंग एट ऑडियंस ओनली। नहीं, ऑडियंस को लगने मत दीजिए, एक्चुअल में आई कांटेक्ट करिए ना, उनकी तरफ देखिएगा। वो बैठे हुए हैं और आप आप अपनी हाइट के हिसाब से वर्टिकल वॉल को देख रहे हैं। आपको अपना बॉडी का जेस्चर, बॉडी उस हिसाब से करनी चाहिए कि उनको एक फील हो कि यू आर लुकिंग एट देम। आई कांटेक्ट मींस यू आर लुकिंग एट देम। ओके मैडम, इट गिव्स यू द फीडबैक। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक ऑडियंस बैठा रहता है ना, तो मुझे मुझे समझ में आता है। मैं अपना पर्सनल बोलूं, कई बार मैं स्टूडेंट्स की क्लास ले रही होती हूँ और मैं उनकी तरफ देख रही होती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि बच्चों को लग रहा है कि मैडम बस हो गया, प्लीज अब खत्म कर दीजिए, राइट, टाइम हो गया अब खत्म। मैं फिर देखती हूँ, हाँ टाइम हो गया शायद। क्यों? मैं जब उनकी तरफ देख रही थी ना, तो उनके फेस में चेंज दिखा मुझे। अपन क्या बोलते रहते हैं, अपन देख नहीं पाते हैं कई बार। डोंट यू फील दिस वे, अब्रो सर? Yeah, madam. With students, like, because I am the authority, so I can take the liberty on that part. But let us say the one you said on the DST presentation, in front of you there are, भी आप देख के ही बोलिए, उनकी जेस्चर से आप gray haired people with with specs, looking at you in a very suspicious manner. उनको देख के ही तो फिर वो हिम्मत छूट जाती है मैडम। नहीं, उनको देखना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम होता है, तभी ठीक रहेगा। क्योंकि उनके जेस्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि जो तुम अभी बोल रहे हो वो ठीक है या नहीं ठीक है। अगर उनके जेस्चर से आपको समझ में आएगा ये ठीक नहीं है, तो उसको जल्दी वाइंड अप करो। और मैंने किया सर ये चीज, अभी ऑनलाइन में मैंने किया। मुझे जगह समझ में आ गया कि आई एम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, मैंने चेंज कर दिया उसका।
यू हैव टू लुक एट देम। ऑनलाइन है तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनको नहीं देखें। मैडम मुझे लगता है कि कोई भी क्लास में वो इंस्टेंटेनियस ऑफलाइन और ऑनलाइन, यस इट इज इंस्टेंटेनियस फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक है, आंखों में आंखें डालने के अलावा और कोई कोई जगह चारा नहीं है नहीं जिसमें है। आप जान सकते हो कि आपका पढ़ाई ठीक हो रहा है या नहीं, हाँ आपका क्लास ठीक है या नहीं, विदाउट सीइंग देम, विदाउट ओनली वाचिंग ऑन द बोर्ड और समटाइम्स सीइंग देम इज जीरो क्लास एक्चुअली। बिल्कुल वो है जीरो क्लास हो जाता है। आई एग्री विद यू। आपको ऑनलाइन में भी मैंने फर्स्ट डे कहा था मैं सबका वीडियो देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सबको देखूं, उनके जेस्चर्स देखूं, मुझे हिम्मत मिलती है बोलने की। और मुझे हिम्मत मिलती है कम वो जहां पॉज रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे इंस्टेंट मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं फीडबैक अपना देखती हूँ। थैंक यू मैडम फॉर द फीडबैक वर्कशॉप 1 में, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इंस्टेंटेनियस फीडबैक मिल जाता है। एग्जैक्टली और मैम यही रीजन है ना, यही रीजन है कि ऑनलाइन में पढ़ाई का हाल ये हो गया, क्योंकि हम उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। आप बोल रहे हैं, हम कभी कभी वीडियो ऑन कर रहे हैं, कभी कभी नहीं कर रहे, मतलब सब टाइम नहीं करते पाते क्योंकि डेटा कोई प्रॉब्लम होता है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और कभी कभी खुद भी नहीं करते, ऐसे इधर उधर के काम करते रहते। तो ये तो रियलिटी है, तो इसको कैसे डिनाई करे। तो स्टूडेंट की तरफ से भी तो ये बहुत ज्यादा होगा, हम तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होके ही ऐसा नहीं कर पाते ठीक से, तो वो लोग क्या करेंगे। इसीलिए आजकल पढ़ाई का पूरा जीरो में चला गया, ऑनलाइन में नहीं कर सकते ऐसे। एक्चुअली पूरा जनरेशन का खराबी हो रहा है ये कोरोना की वजह से। सो आई कांटेक्ट इज मस्ट, आप कैसे भी कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू फॉर द फीडबैक मैडम। ओके ओके 28 तारीख को मेरे को ये अथॉरिटी के सामने एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा। I was a little afraid. I mean, all vice chancellors and everybody will be there, so I will look at them, whatever way it is. Eye contact बना के ही प्रेजेंटेशन दूंगा। हाँ बिल्कुल, तभी लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में वो बिलीफ है। नर्वस 1-2 मिनट, अगर आपने अब्रो सर बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, मुझे लग रहा है अब्रो सर की आवाज है। तो आप खूब रिहर्सल करिए और फिर आई कांटेक्ट करिए। आप थोड़ी देर नर्वस होंगे, फिर आप बोल पाएंगे, बट करिएगा। उनको भी आप उनमें एक अलग चीज अंदर जाएगी विद अ डिफरेंट वो। ठीक है मैडम, श्योर। जो 3 E's है ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी, वो जैसे मैंने कहा, एनर्जी आनी चाहिए आप में एज अ टीचर। तो स्पेशली स्पीच के वक्त में भी ऐसा नहीं है कि हमें एनर्जी ना दिखे। अगर हमको ना एनर्जी ट्रांसफर करने, स्पीच इज अबाउट ट्रांसफरिंग द एनर्जी। मैंने कहा ना, जो कम्युनिकेशन इज लाइक टेकिंग अ स्टिमुलेटिंग बाय अ ब्लैक कॉफी। आप ऐसा बोल रहे हो जिससे कोई, जैसे ब्लैक कॉफी से स्टिमुलेट हो रहा है, वैसे आप उसको स्टिमुलेट कर दे रहे हो। सो हाउ यू विल स्टिमुलेट? यू विल स्टिमुलेट बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी। सो यू शुड बी विथ फुल ऑफ एनर्जी so that you are able to transfer the energy to them. अगर आपने उनमें एनर्जी ट्रांसफर की है तो उनको आपकी स्किल्स इफेक्टिवनेस बेटर रखेगा। एंड आई कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्रेशन। वर्ड्स प्ले ओनली 10% रोल। माइंडेड वर्ड्स प्ले ओनली 10% रोल। जो भी चीज आपको बोलनी है उसको आप प्लेन लैंग्वेज में भी बोल सकते, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप बोलिए, नो इशू with having eye contact and expression. Now, speech कैसे देते हैं? Speech start करने से पहले 2-3 चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले, जो अगर हम ऑफलाइन स्पीच दे रहे हैं तो जो माइक है उससे आप अपने 4 फिंगर्स रख दीजिए। This should be the way. जहां भी माइक है वहां पे 4 फिंगर्स रखिए, उसके बाद आपका माउथ आना चाहिए। There should be a space of 4 fingers when you are speaking in front of a mic. ये golden rule है। Not too far, not too near. One rule. Another, speech start करने से पहले आपको अपना acoustics देख लेना चाहिए। कितने भी बड़ी पोस्ट पर हैं, but you should take personal care as well. कि देखो इसको एक बार चेक कर लो, इसको you should डायस के पास खड़े होकर देख लो। You should feel you are comfortable. You should reach before time. इसको ऐसा मत सोचिए कोई हो जाएगा, अरे मैं इस पोजीशन पे हूं और मैं इन सबको, नहीं, इट्स नॉट दिस वे। जो पीपल अपनी परफॉर्मेंस के लिए केयरफुल होते हैं वो ये सब करते हैं, दे टेक केयर। ये एक परफॉर्मेंस है, जैसे डांस एक परफॉर्मेंस है ना,
आप देखते हो कि आप अपने स्टेज में कंफर्टेबल हो कि नहीं। वैसे कम्युनिकेशन भी, योर स्पीच इज अ परफॉर्मेंस दैट यू आर गोइंग टू गिव ऑन द स्टेज। परफॉर्मेंस का रिहर्सल होना, परफॉर्मेंस का आप अपने एम्बियंस से कंफर्टेबल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग इस चीज को समझते नहीं है वो ही ये कहेंगे कि अरे देखो ये इतना कर रहा है। नहीं, बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है, यू शुड टेक इट। और स्पीच बोलने से पहले टेक डीप ब्रेथ्स, अपने अंदर हवा थोड़ा भर लीजिएगा। टेक डीप ब्रेथ, अगर आप डीप ब्रेथ्स लेंगे तो हवा आपके अंदर थोड़ा आएगी और आपकी आवाज पेट से निकलेगी। द वॉइस विल बी इन अ बेटर वे। जैसे बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन की आवाज कहाँ से आती है? पेट से आती है। उसकी वॉइस में वो जो ग्रेविटी दिखती है। बीच बीच में डीप, अब जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं, दे टेक डीप ब्रेथ्स इन बिटवीन। हम नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते इस चीज की। मैंने जब डीएसटी का दिया तो मैंने बहुत डीप ब्रेथ्स ली प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले। आई वॉज रिहर्सिंग इट अगेन एंड अगेन। टेक डीप ब्रेथ्स, वॉइस अच्छी आएगी। टेक लॉट ऑफ एयर इनसाइड यू। इज इट ओके? You will get a clear voice, more perfect voice. Nervousness is normal, एकदम नॉर्मल है। बिल्कुल मत घबराइए कि मैं घबरा रहा हूँ, सब घबराते हैं। अच्छे से अच्छा, बड़ा से बड़ा स्पीकर घबराता है। अगर आप घबरा रहे हैं तो मतलब आप नॉर्मल पर्सन हैं। अगर आप घबरा नहीं रहे हैं तब आप एबनॉर्मल पर्सन है। जो पर्सन घबरा नहीं रहा है इसका मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस पर केयर ही नहीं करता। कैसे भी जाए चलेगा, तो वो घबराएगा नहीं, कैसे भी जाने दो, बहुत कैजुअल है अपने परफॉर्मेंस को लेके। बट जो पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को लेके पर्टिकुलर है, चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो, देन ही विल बी नर्वस। ऑलवेज यूज स्टैटिस्टिक्स टू सपोर्ट योर मैसेज। जब आप स्पीच दे रहे हैं तो जो चीज बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ आप स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स लेकर आएंगे तो स्पीच ज्यादा अच्छी रहती है। कोशिश करिए इंक्लूड अ स्टोरी, एक स्टोरी को इंक्लूड करने की कोशिश करिए अपनी स्पीच में, मैसेज ज्यादा अच्छे से डिलीवर होगा। शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, दीज आर द टॉपिक्स आई वुड लाइक अपने स्पीच में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बीच बीच में जब भी आपको लगे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो जैसे ही आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आप अपने आप को ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं। हम सेम लेवल पर आ रहे हैं, सेम चीज की बात कर रहे हैं। स्पीच हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड, वे वर्ड नहीं जानी चाहिए स्पीच, क्योंकि स्पीच में प्रेजेंटेशन नहीं है। सो स्पीच में आपको केयरफुल रखना है कि there should be a beginning, there should be a middle part, there should be an end. You should talk about this thing. और जनरली हम स्पीच में या प्रेजेंटेशन किसी भी चीज में जो कंटेंट है वो 3 मेन पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक स्पीच में या एक प्रेजेंटेशन में आपके जो मेन क्रक्स है वो 3 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यू कैन एलाबरेट ऑन दीज 3 पॉइंट्स, बट मेन चीज should be 3. Try to divide things into 3 parts. ऑडियंस को भी लगे कि आपने इसके बारे में बात की 1, सेकंड आपने इसके बारे में बात की this, एंड थर्ड आपने इसके बारे में बात की, एंड देन आपने इसको कंक्लूड किया। सो देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर। ऑडियंस को कंफ्यूज मत करिएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। में यूज रिटोरिक लैंग्वेज, ये बहुत, जैसे मैंने बोला प्रेजेंटेशन में मेटाफोरिकल लैंग्वेज, तो स्पीच में रिटोरिकल लैंग्वेज। आई स्पीक ऑन दिस थोड़ा और, मैं इसको एलैबोरेट करूंगी कि ये रिटोरिक लैंग्वेज क्या होती है। वॉच फॉर फीडबैक, हमेशा आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी स्पीच की रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और खुद ही बोलिएगा यार इस वक्त तो मैं ठीक से नहीं बोल रहा था, ये चीज पे मैं कैसे है, दिस डजंट लुक्स गुड, दिस वाज वेरी डल। अपने आप को, आपसे अच्छा कौन जानता है अपने आप को, और आपसे अच्छा आपको फीडबैक कोई नहीं दे सकता। लोगों को क्या है, आप अपना फीडबैक बोलूंगी मैं बहुत अच्छा था, ठीक था,
बट अगर मुझे अपना ट्रू फीडबैक चाहिए, आई हैव टू सी द वीडियो ऑफ माई ओन, बार बार देखना है मुझे। अगर मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो आई हैव टू सी कि मैं फास्ट होती हूँ, मेरा ऑडियो ठीक नहीं रहता, मेरे जेस्चर्स ठीक नहीं रहते, मेरे कहाँ पे प्रॉब्लम है, आई हैव टू सी। इट्स माई इम्प्रूवमेंट, इट्स माई परफॉर्मेंस। मेरा डांस है आज, सो आई हैव टू सी मेरे स्टेप्स कहाँ रॉन्ग है। इट्स एन आर्ट, अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। जैसे आप पेंटिंग के लिए नहीं करते हो प्रैक्टिस, डू यू थिंक एक बार आपने पेंटिंग की और आपकी परफेक्ट पेंटिंग बनेगी? नो, you have to do practice, and teacher has to be a good communicator. आपको आना चाहिए अच्छा कम्युनिकेशन, इट्स अ रिक्वायरमेंट। आपका जॉब ही कम्युनिकेशन है एक्चुअली में, isn't it? Our job is about communicating things. Learn to be comfortable with silence. ये एक अलग चीज है। अगर बीच में साइलेंस होता है, कोई चीज है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल, डोंट गेट नर्वस। सपोज आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और कहीं आपका पॉज हो जाता है, मे बी टेक्निकल फॉल्ट है, मे बी आपकी खुद की फॉल्ट है, मे बी आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, सो साइलेंस से यू शुड बी कंफर्टेबल। पॉज योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को बोलिए ओके ओके, कंपोज होइएगा अपने आप को। सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द साइलेंस। नाउ जो रिटोरिकल लैंग्वेज है, जो ओबामा ने 2004 में, ही वाज जस्ट अ सेनेटर, और ओबामा की जो स्पीच थी, वो स्पीच 2004 स्पीच, ऐसा बोलते हैं कि ओबामा 2004 स्पीच टर्न्ड हिम इनटू द प्रेसिडेंट। एक स्पीच आपको हीरो बना सकती है, एक मूवी एक्टर को हीरो बना सकती है। एम आई राइट? अगर आपकी एक मूवी अच्छी चल गई, एक मूवी शोले अच्छी चल गई, तो आपको लाइफ लॉन्ग हीरो बना सकती है। ऐसे ही एक अच्छी स्पीच आपकी बहुत सारी चीजों को टर्नओवर कर सकती है। सो ओबामा की एक स्पीच मेड हिम द प्रेसिडेंट, ऐसा कहते हैं। 2004, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, 2004 Obama speech turned him into the president. Can you imagine? उसकी स्पीच का इतना एनालिसिस हुआ है, हर सेंटेंस का एनालिसिस हुआ है। उसने इस सेंटेंस में किस टाइप की लैंग्वेज यूज की, किस टाइप के वर्ड्स यूज किए, किस टाइप के जेस्चर्स यूज किए, किस टाइप का उसका बॉडी लैंग्वेज था, कहाँ वो स्माइल किया, किस टाइप से उसने अपने ऑडियंस को किया, कैसे अपलॉज हुआ। कुछ एक आध सेंटेंस पे इतना अपलॉज हुआ उसके ऑडियंस ने, एंड दैट स्पीच जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर हिम। आई होप यू एग्री। आई होप कितने लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं उस ओबामा की वो 2004 स्पीच से। कितनी यूनिवर्सिटीज में, कितने कम्युनिकेशन के अमेरिका के कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स ने उस स्पीच के एनालिसिस किए, वर्ड बाय वर्ड। एक लाइन है उसकी स्पीच की, आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, एक लाइन है, और फिर कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स ने बोला कि देखो इस लाइन से ऑडियंस ऐसे कनेक्ट हुआ, फिर उसकी स्पीच का एक लाइन है, फिर बोला देखो ऐसे कनेक्ट हुई ऑडियंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट रोल द स्पीच कैन प्ले। थोड़ा सा मैं ओबामा की स्पीच, मुझे वो है, बट मुझे वो स्पीच ओबामा की बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जस्ट सी, हम थोड़ा सा सुनेंगे उसकी। हाँ, जस्ट विल प्ले इट। Barack Obama in 2004 was totally... Are you able to hear? Yes, ma'am. Yeah, we are able to Yes, hear. ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अच्छा, It's coming. मैं बीच में एक दो सेंटेंस पे रुकूंगी और फिर बताऊंगी उस सेंटेंस को। पूरा स्पीच तो हम नहीं कर सकते, एक दो सेंटेंस में आपको करूंगी बीच में। हाँ, बोलो। unknown. People were saying,
I don't know who this guy is. People were not Wonder knowing why who they this picked him. guy is. He had this reputation as a bit of an upstart, as sort of a young, rising figure in the party, but no one knew who this guy was. This was his chance to introduce himself to people. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Going into this speech, we've had 4 years of George Bush, and we felt as a country like we've grown further apart. 2004 was very much a divisive partisan race. Obama's speech is in some ways an antidote to that. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we're all connected as one people. If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. He gives a speech that presages his entire political message of 2008, which is this sort of post-partisan argument. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Obama was born with two great gifts. One is his mind, and the other is his ability to speak to large groups of people. There are three things that Obama does that really makes that speech effective. He wants concrete detail. He likes story, and he loves antithesis, the use of repetition in structure to show contrast. There is not a liberal America or a conservative America. There is one America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach little United States of America. The way he uses his hands, he actually points a lot. It's dynamic. And he doesn't do that so much anymore. He's a little more solemn and reserved when he gives speeches today. And I think it's more reflective of his office. In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face. See, her sentence is so effective. The hope of a funny kid with a funny name. Are you able to hear the language he's using, the words he's using, the vigor with he is speaking? Like, suppose oh, sorry, like, suppose
this particular phrase, जो मैं बोल रही थी कि that we may use the rhetorical language, it means you repeat the first word or phrase in one sentence at the beginning of successive sentence. Like this is one of the sentence I have taken. We have real enemies in the world. They must be found, they must be pursued, and they must be defeated. So this is rhetorical language that they must be found, they must be pursued, they must be defeated. Like another line, a funny kid with a funny name, America would like to give the place to him. So every sentence, if you see the Obama speech, you will be able to feel that how he is able to connect with the audience. एक और speech जो मैं देख रही थी वाजपेयी सर की speech. That is what I was thinking. You will relate Vajpayee next. Yeah. हाँ, I was thinking that only. हाँ, the way he speaks, he converts the speech into a poetry, isn't it? Absolutely, absolutely. I was thinking that you will be now talking about Vajpayee. And Actually, बहुत लोगों की speeches हैं, but जो rhetorical language है वो ओबामा ने बहुत यूज की है. उसके सेंटेंस में जो वर्ड्स उसने यूज किए, ऐसा बोलते हैं कि उसने ओबामा की स्पीच जो है उसने 15 डेज में बनाई, फिर 15 डेज में उसको रीराइट की, करीब 1 मंथ उसने उसकी प्रैक्टिस की, फिर उसके प्रैक्टिस सेशंस की और फिर उसने किया. तो उसकी स्पीच में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. बट वाजपेयी सर तो इनबॉर्न है, शायद स्पीकर, इनबॉर्न स्पीकर थे वो. उनकी जो स्टाइल है बोलने का, उनका जो जेस्चर है, और वो पूरी स्पीच को पोइट्री के फॉर्म में बोल देते हैं. जैसे मैंने ये देखा जब जवाहरलाल नेहरू सर एक्सपायर हुए तो उन्होंने ये पोर्शन है वाजपेयी सर की स्पीच का, भारत माता इज स्ट्रिकन विद ग्रीफ टुडे, शी हैज लॉस्ट हर फेवरेट प्रिंस, ह्यूमैनिटी इज सैड टुडे, इट हैज लॉस्ट इट्स डिवोटी, पीस इज रेस्टलेस टुडे, इट्स प्रोटेक्टर इज नो मोर, द डाउनट्रोडन हैव लॉस्ट देयर रिफ्यूज, The common man has lost the light in his eyes. तो ये जो एक रिपीटिशन होता है ना, वो एक अफेक्ट क्रिएट कर रहा है. देखो बार बार वो एक चीज पे बोल रहे हैं कि भारत माता हैज लॉस्ट हर फेवरेट. लॉस्ट, जो लॉस्ट वर्ड है वो बार बार आ रहा है और वो उससे सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं. भारत माता हैज लॉस्ट हर फेवरेट प्रिंस, ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट इट्स डिवोटी, Peace is restless today क्योंकि उसका protector is no more. Downtrodden have lost their refuge. Common man has lost the light in his eyes. इस sentences को बार बार पढ़ें तो अपन को समझ में आ रहा है कि चीजों को कैसे कनेक्ट किया गया है स्पीच में. जो लैंग्वेज होती है उसमें बीच बीच में आपको अगर एम्फेसिस देना है एक ही चीज को, तो आपको उसको कनेक्ट करना है उन चीजों को रिपीट करके. This person lost this, this person lost this, this person lost this, this person lost this. It gets a connectivity, and then उसका impact आना शुरू हो जाता है. I hope I am able to deliver what I wanted to through the Obama speech and this thing. The language you can use, the flair you can give by a story. आप स्टोरी डालिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स डालिए, कुछ लैंग्वेज को फ्लेयर दीजिए यूजिंग दिस रिटोरिकल लैंग्वेज, एंड स्ट्रक्चर करिए, रिहर्सल करिए. आई थिंक यू आर डन विद दैट इन दैट केस. Anything about the speech left? Anything left about the speech part? It's perfectly all right, ma'am. Perfectly all right. Okay. Now we are coming to the talk part. Talk जो है unscripted speech होती है, but it is very spontaneous, and but it you prefer talk when you are very confident about your speech, about your content. So it is most personal engagement with the audience, though it's most powerful, but no slides to follow, no written speech. So you really need a good memory for this.
दो इसमें भी एक और वो था, बट वी आर, आई थिंक टाइम इज अप, 10:57 and we are supposed to start. So you can have some cue cards with you. You can rehearse the timings. Don't speak too quickly, and talk can be more of a conversation with your audience. I consider talk as basically the conversation with your audience. So that's all. I think I have to stop since the time is over. Ma'am, yes, yes. Sometimes I feel that the good speech, the best speeches also include talks, because it should be a conversation in between, huh? Yeah, because many a times when a good speaker is speaking, actually, if the speaking is so powerful, that actually means that he is not only having a script, but he has more than the script, much more than the script. अंदर से आना शुरू हो जाएगा. And the whole thing is coming through his sentiment, his emotion, and all. It might be for 5 years he has gathered those words, those feelings, those contents, which he is speaking on one day. Then only it becomes that powerful. Because बहुत सारी ना बोली बातें जब लोग बोलना शुरू करते हैं तो वो एक अलग चीज हो जाता है, तो अलग वो माहौल बनता है, माहौल बन जाता है, तो वो स्क्रिप्ट का मतलब मोहताज नहीं होता, तो इट बिकम्स लाइक रियलिटी. तब वो रियली इफेक्ट करता है जो सुनते हैं उनको. मतलब ऐसे ही, मतलब कोई कितना भी प्रिपेयर करे, जैसे कि ओबामा सर की बात कर रहे थे हम, वो 1 महीना प्रिपेयर, मुझे लगता है उन्होंने जितना स्पीच दिया उनका, देखिए टारगेट अलग था, उनकी स्पीच का टारगेट अलग था. हम लोग ऐसा नहीं, उनकी वो, क्योंकि वो उनको एक मौका मिला था प्रेसिडेंट के उसके लिए, तो उनको पता था कि अगर यहाँ नहीं किया तो फिर गया, मतलब कहाँ क्या बोलना है, कहाँ का क्या जगह है जहाँ पे अमेरिका पीछे जा रहा है. तो उनके फीलिंग्स में वो था पूरा, तो उन्होंने पूरा डाल दिया फीलिंग्स का. फीलिंग्स निकाल दी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर दिया. उन्होंने वो बच्चे को भी देखा था, उन्होंने उस बच्चे को भी, उनका ऑब्जर्वेशन वैसा था, उन्होंने वो बच्चे का भी देखा. जैसे कि हम लोग तो बहुत लोगों को देखते हैं, पर देख के भी नहीं देखते हैं. पर वो ऐसे जगह पे गए थे, मतलब उनको प्रेसिडेंट के जगह पे उनको जाके काम करना था, उनको काम करना था, इसलिए उन्होंने वो देखते थे सारी चीजें कि क्या हो रहा है मेरे अमेरिका में. उसका फीलिंग था कि मेरा अमेरिका है, तो ये क्यों पीछे जा रहा है, ये सुपर पावर होके भी क्यों इंडिया आके सब कुछ एक्वायर कर रहा है, या फिर कोई भी हो. मुझे लग रहा था कि उनको, मतलब अपने नेशन को, अपने लोगों से आगे कैसे बढ़ाना है, उनको ये लगता था. मुझे ये लगता है, मतलब इसलिए मैंने शेयर किया. बिल्कुल. इवन मोदी जी का जब मैं सुनती हूँ तो वो कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, उनका अपने आप को चौकीदार बोलना, अपने आप को वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ऑफ कोर्स, अगर आप उनको कुछ खराब बोलिएगा, वो उसको भी भला बना देंगे, मतलब अच्छा बना देंगे. यही होता है. जैसे ओबामा प्रेसिडेंट बने, वही तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का भी वैसा ही सिलेक्शन होता है. जो अच्छा स्पीच होता है, जिनके स्पीच में लगता है कि वो रियली काम करना चाहते हैं, वो काम कर पाए या ना पाए, पर फिर भी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग उसका वही मैटर करता है. ऑपोजिशन तो बोल नहीं पाता है, इसलिए तो मैं इतना नहीं, जब जिसको बोलने को मौका दिया जाता है ना, वो तो बोलता ही है, पर कैसे बोलता है उसका इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है. मेरे ख्याल से हमारे टीचिंग में भी जो टीचर्स हैं उनमें नॉलेज आसपास ही होगी, या हो सकता है, बट बहुत बार टीचर अपनी अफेक्टिवनेस, अपने कम्युनिकेशन के कारण आगे ले जाता है, isn't it? And becomes one of the favorite teacher. So, of course. Ma'am, will you please show that pitfall side? अच्छा, okay. हाँ, पिटफॉल्स में ये है कि हेड डाउन है, कोई आई कांटेक्ट नहीं है, टोन फ्लैट है, बहुत ज्यादा मम्बल इफ बिट्स, आप पर्सनल नहीं हो, इम्पर्सनल हो, और बीच कल मैंने इम्पर्सनल डाला था, वो तो ह्यूमर होना चाहिए बीच में, कुछ मजाक होना चाहिए बीच में. अच्छा बहुत जरूरी है स्पीच में कुछ एक लाइट. जब मैं जो बोल रही थी ना, आई कांटेक्ट होने से ये बहुत आता है कि आपको समझ में आ जाता है कि अब आपको कुछ और करना है, बीच में एक पंच देना ही है. एग्जैक्टली, यही समझ में आता है कि अभी मुझे कुछ दूसरा स्टोरी शुरू करना है, या फिर पर्सनल जैसे एक स्टोरी नहीं, अपन स्टूडेंट्स के बीच में बोलते हैं कि एक मैंने जग लिया, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन्स डाल दिए और वो जग भर गया, है ना. तो हमको लगता है वो जग भर गया, हमको पूरी नॉलेज आ गई, लेकिन अगर हमने उसके अंदर सैंड डाल दिया तो क्या हो गया, वो सैंड भी तो पूरी चली जाती है ना अंदर. सो
I think those examples देके फिर आदमी को अपना फिर से I think regain, कुछ humor होना चाहिए बीच में, बहुत repetition नहीं होना चाहिए, annoying body language नहीं होनी चाहिए. You should not be rude. You should not feel that I know everything. I think हम अपने बच्चों से भी बहुत कुछ ले सकते हैं, अपने ऑडियंस से हमेशा ले सकते हैं. I think. So that's all from my side. I think actually आज प्रेरणा मैडम का भी था, but she is not well, and even I was supposed to cover it, but इतना time में I think I'm not able to cover the Prernas. We'll share the presentations with you of Prerna as well, and अगर कुछ issue होगा तो we may discuss. You may post it in the Google Classroom. So I'm stopping the sharing part now. Anything else to discuss? I think we can discuss. इसमें बहुत सारे टास्क भी थे कि आप लोग प्रेजेंटेशन दो, आप अपने हिसाब से कुछ बनाओ. So if anybody wants to, I think it's already 11, so 11:03 हो गया. Okay. Ma'am, if you permit, we'll ask one question to Shumanto. Yes, Mukesh madam. Acha, Shumanto, the form which you are, circulating every day, one is the morning session and second one is the afternoon session. So what I am doing, in the morning session, the session I am attending, I am clicking on that checkbox only, and on the afternoon session, I am clicking on all the checkboxes as I am attending all the sessions every day, right? Right. That is fine. So now you are circulating this form. So I don't think that there will be any session in the afternoon. So should I put the tick in? You can, but also I will at 1 p.m. also I will share it again. Okay. Yeah, I will share it twice today also, right now, and also at 1 p.m. also. So then I am just clicking on the communication skills session only in this checkbox only? Because Yes, this is for communication skill since it is over. Okay. So I'm not clicking on the rest three. Right. Okay. Thank you for the explanation. Monisha madam, should I ask other actually? Yeah. 11 o'clock. So I was supposed to complete by 11. So I'm done. Though my slides are remaining, but I'm done. I think I'm able to communicate to my participants the crux of the presentation. It was a wonderful lecture. Yeah, thank you. Great lecture.